Hey guys, welcome back to the channel. आज के वीडियो में I want to take you to a very special place. Throughout my travels, a handful of places have left me speechless. This is one of them. Dzuko Valley spreads across Manipur and Nagaland, and it is a true hidden gem of India. The hike to the valley is long, but it is extremely rewarding at the end. And आज के वीडियो में I want to give you a virtual tour of Dzuko Valley. And if you guys are also planning a trip here, this video will also serve as a complete travel guide. Things to pack, the cost, and how to reach this place. This is the one video you need to watch before coming here. Also, if you guys are new here, मैं एक full time doctor हूँ और अपने clinic से आने के बाद free time में खुद से travel videos बनाता हूँ. And I have been making such videos for a couple of years now. And this has given me the opportunity to explore some amazing places in India and abroad. And in this series, we are road tripping across Meghalaya, Manipur and Nagaland. So make sure to check out the entire playlist after you see this video. Anyways, अपने headphones लगा लो and enjoy the video. What is up guys and welcome to another video. अभी टाइम हो रहा है 5:30 AM. बाहर का टेम्परेचर है 9 डिग्री. एंड आज की वीडियो में आई एम गोना शो यू वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग प्लेस इन द नॉर्थ ईस्ट. ये पूरी ट्रिप का पर्पस वाज दिस ट्रैक. वी आर गोइंग टू ज़ूको वैली एंड आज की वीडियो में आई विल बी शोइंग यू एवरीथिंग यू नीड टू नो व्हेन विजिटिंग ज़ूको वैली. इक्विपमेंट, प्रिपरेशन, टाइमिंग्स, फीस, एवरी स्मॉल डिटेल्स ये सब वीडियो में आएंगे. एंड जितना हो सके आपको डिटेल बताते जाऊंगा एंड सिनेमैटिक शॉट्स भी दूंगा फ्रॉम दिस ट्रैक. एनीवेज 5:30 हो रहा है. बिफोर इट गेट्स टू सनी, लेट्स गेट दिस ट्रैक स्टार्टेड एंड वेलकम टू ज़ूको वैली. Hey guys, before we get the hike started, I just want to share with you a few travel products that I've been using recently and have really come to like, and I'm sure you guys would like it as well. After traveling so much, there's one thing that I've realized, that accessories make your travel very easy. And recently, I've been using products from this company called as the Black Box. I am extremely happy and impressed by their products. Let me tell you why. First of all, they have a wide selection of accessories, from duffel bags to passport holders, to sunglass holders, to phone covers, to wallets. Not only that, but all their products are made from 100% vegan leather. And they also offer free customization so that all your products look unique. Not only travel products, they make stuff for office and daily stuff as well. For example, they sent us this really cool travel wallets that we've completely customized to our liking. Priya chose a plain, I chose this camera of course. The wallets are really cool, nice quality, and it has space for so many things like your passport, your international driving permit, a place for pen to fill out immigration forms, and of course place for cards and your cash. Overall, the fit and finish and the quality is extremely high, so check it out by using the link here or with the one in the description box. And to all the amazing viewers of this channel, they are offering flat 15% off. Use this code at checkout to get 15% off on all their products. Anyways, let's get this hike started. So to begin with, ज़ूको वैली का ट्रैक 1 डे में आराम से हो सकता है. I would recommend जितना जल्दी चालू करो उतना ही अच्छा है. कोहिमा से we started at 5:30 AM. ज़ूको वैली का ट्रैक starts from this town called as विश्वेमा, जो कोहिमा से 1 hour away है. विश्वेमा से you will have to take a dirt road that will take you to the start of the trek. If you don't have your own car, विश्वेमा से there are 4x4 taxis जो आपको ट्रैक के स्टार्टिंग तक लेके जाएंगे. Since we were self-driving, we took a guide with us who helped us with everything. उसकी एजेंसी और गाइड का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. They will help you with literally everything and I cannot recommend them enough. पूरे ट्रैक पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. You will need to carry your own food and water and dress in layers क्योंकि कभी भी ठंडी एंड गर्मी लग सकती है. At the end of the trek, there is a small shop that has some water and food. And there आपको वैली के फीस पे करने पड़ते हैं which is 100 rupees per person. Hey guys, so विश्वेमा टाउन से around 4 to 5 kilometers uphill, यहाँ पे एक पार्किंग एरिया है ऐसा. द रोड अप टू दिस प्लेस बहुत ही ज़्यादा ट्रेचरस है, रॉकी है, रास्ते है ही नहीं, इट्स ऑल पत्थर.
एंड अगर आपकी खुद की गाड़ी है तो मेक श्योर कि इट्स अ बिग कार विथ गुड ग्राउंड क्लियरेंस. छोटी गाड़ी तो यहाँ पे नहीं आ पाएगी. अदरवाइज ऑल्टरनेटिवली व्हाट यू कैन डू इज़ कि नीचे से 1500 रुपीज़ पर जीप वो लोग ऊपर लेकर आते हैं आपको. दैट वॉज एन एडवेंचर इन इट सेल्फ. एनीवेज बस अभी गाड़ी यहाँ पे पार्क की है एंड वी आर स्टार्टिंग द ट्रैक. चलो. Hey guys, 20 minutes into the hike. So far so good. Starting का पोर्शन काफ़ी अपहिल बट उसके बाद बहुत ही ग्रेजुअल एसेंट है फ़िलहाल तो. प्रॉपरली पेव्ड ऑलमोस्ट रास्ते हैं. दैट्स अ गुड थिंग. एंड व्हाट द गाइड इज़ टेलिंग अस कि ऑलमोस्ट 1 आवर अपहिल है थोड़ा, उसके बाद पूरा फ्लैट है. होपफुली वंस यू एंटर द वैली उसके बाद तो पूरा स्ट्रेट ही है. सो फार सो गुड. आगे देखते हैं. सो गाइज 30 मिनट्स इनटू द हाइक प्रॉपर स्टेप्स चालू हो गए. लाइक बड़े बड़े स्टेप्स. चेक दिस आउट. समथिंग लाइक दिस. ये वाले तो भी छोटे हैं थोड़े बट दिस लाइक यहाँ पे तो प्रॉपर बड़े बड़े ही है. Hey guys, so around 1 hour 45 minutes के बाद I think climb ख़त्म हुई है and now यहाँ से the start for the valley. Okay, यहाँ से it's all straight and then you can see the valley, the Dzuko Valley. and ये point से भी views तो बहुत amazing है. Oh, definitely not a easy hike. थोड़ा फिटनेस लगेगा बट द व्यूज़ आर जस्ट इनसेन यहाँ से. चेक इट आउट. Hey guys, so back to the DSLR and the gimbal. क्वालिटी में तो डिफरेंस समझ ही रहा होगा बिकॉज अभी we have reached a place जहाँ से अभी now you can walk straight. सीधा सीधा चल सकते हो into the valley. अब तक का hike definitely बहुत difficult but now things will get easier. Oh, I'm so excited to see this because मैंने सिर्फ इसके photos देखे थे. And we've been talking about it for almost 3 years. Yeah. Dzuko Valley, na? Almost for 3 years we've been talking about it. Coming to this place, but Nagaland was so far. But it was very much on our list. Very much on our list, and also no one. I want to with this channel. I want to promote the fact to come to less explored places, right? And Dzuko Valley is the prime example of this because northeast hardly no one explores. सब लोग को जाना है मनाली, सब लोग को जाना है केदारकंठा. यही सब ट्रैक्स पॉपुलर हो गए. यहाँ पे देखो नॉर्थ ईस्ट में से बहुत ट्रैक्स है. एट द सेम टाइम नो क्राउड. पूरे ट्रैक पे अब तक हम लोग को एक जन नहीं मिला है. वी आर द फर्स्ट पीपल हियर. दैट्स मैड. एनीवेज आगे का ट्रैक दिखाता हूँ. सो एक्साइटेड फॉर दिस. चलो.
Hey guys, so वहाँ पे वो गांव दिख रहा है. That is the base camp for the Dzuko Valley. Okay, if you guys want to stay overnight, there are people जो overnight भी वहाँ पे रह सकते हैं. एक बड़ा सा dormitory है where basic supplies देते हैं वो लोग. But of course because of lack of time हम लोग overnight तो नहीं रहेंगे वहाँ पे. But if you guys have the time, you can stay here in the valley. I think और 45 minutes लग रहा है वहाँ पे जाने के लिए to reach the valley. बट धूप और कोल्ड दोनों मिक्स हो रही है, ऑल्टरनेट हो रही है, तो कीप सन एज वेल एज कोल्ड प्रोटेक्शन. एनीवेज धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे. व्यूज़ आर डेफिनेटली हेल्पिंग. चलो आगे दिखाता हूँ. सो टोटल ऑफ 5 आवर्स के बाद वी हैव रीच द टॉप. यहाँ से व्यूज़ बहुत अमेजिंग है वैली के. जो 5 घंटे चल के आए पूरी थकान उतर गई 1 सेकंड में व्यू देखने के बाद. व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, व्हाट अनटच्ड प्लेस. यहाँ पे और कोई दिख ही नहीं रहा है मुझे. अभी बस यहाँ पे थोड़ा बैठेंगे, थोड़ा लंच करेंगे, थोड़े फ़ोटोज़ लेंगे. आई एम रनिंग आउट ऑफ लाइक मुझे एकदम ऐसे रेस्टलेसनेस हो रहा है कि कहाँ से शूट करूँ, कितना शूट करूँ, कैसे शूट करूँ. आई एम ओवरवेल्म्ड विद दिस व्यू. एंड नाउ आई एम जस्ट फिगरिंग आउट द ड्रोन परमिशन. यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ फ्लाइंग द ड्रोन एंड द परमिशन. यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है कॉलेज सेओ जो ये पूरा वैली क्लीन रखती है, पूरा रेगुलेट करती है. तो वो लोग का फ़ी इज़ 10,000 रुपीज़ फॉर 1 डे अगर आप यहाँ पे आ रहे हो. इफ़ यू वांट टू फ्लाई योर ड्रोन इन द वैली, बिकॉज आई हैव रेड ब्लॉग्स, आई आस्क्ड देम ऑल्सो इफ़ यू डू इट विदाउट परमिशन आपका ड्रोन कन्फिस्टिकेट हो जाता है. लॉट्स ऑफ थिंग्स कैन हैपन. यू डोंट वांट टू मेस विद द लोकल पीपल हियर. आई होप दिस शॉट्स आर वर्थ इट. दिस डेफिनेटली इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. लेट मी शो यू द शॉट्स फ्रॉम हियर. चलो. the perfect place to end this video. If you guys liked it, subscribe to the channel, share it with your friends, and don't forget to give it a big thumbs up. If you guys have any doubts about the trek, jitna ho sake I'll be helping you guys. Put it down in the comment section so that if you guys have any doubts, I'll try and clear it for you. And just saying goodbye to this place, super difficult. बट इट्स 1 o'clock. हम लोग को इधर से जल्दी निकलना है बिकॉज वापस जाने के लिए 4 घंटे लगेंगे एंड सनसेट यहाँ पे 4:30 को होता है. सो या आई होप यू गाइज लाइक्ड इट. एनीवेज, until the next time, stay safe, keep on traveling. I'll see you guys soon.